I guess we are live now. Are we? I hope I am audible and visible too. Hello. Okay, hi everyone. पहले 12 बजे तक हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, देन उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन की तरफ। लेट्स वेट। थोड़ा सा सेटअप कर लूँ मैं, वेट। Where is my screen? Here it is. It's not visible still. Wait, it's showing black screen. Wait. I guess now it will be visible. Do let me know in the comment section. I guess screen is visible now. कमेंट में बता देना अगर कुछ आवाज़ आगे पीछे हो तो। लेट्स स्टार्ट। डेली वाले क्वेश्चन ही करते हैं। लास्ट 2 डेज तो हो नहीं पाए थे, ट्राई तो करा था बट हुआ नहीं था। एक स्पेशल ट्रिपलेट वाला था, ये हमने सबसे पहले एन क्यू में लिखा था, देन हमने इसे ऑप्टिमाइज़ करके एन स्क्वायर भी करा था, बट स्टिल वो ऑप्टिमल नहीं था या बेटर भी नहीं था। और नेक्स्ट डे नंबर ऑफ कंप्यूटर अनलॉकिंग प्रॉब्लम, इस वाले में परम्यूटेशन फाइंड आउट नहीं हुआ था, तो ये भी स्किप करना पड़ा। चलते हैं आज वाले ट्राई करते हैं। काउंट कवर्ड बिल्डिंग्स। ओके, you are given a positive integer n representing a n cross n city. Okay, you are also given a 2D grid buildings where building I x comma y denotes a unique building located at coordinate x comma y. क्या कहना चाहते हैं ये n इज इक्वल टू 3, हमें एक n वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तो n क्या है? रिप्रेजेंटिंग n क्रॉस n सिटी। ओके, अगर 3 है तो 3 की सिटी, इसका क्या मतलब है? अच्छा ओके, जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है तो 1 2 3 और 1 2 3 ये एक पूरी सिटी है। ओके, अब इसके अंदर बिल्डिंग्स कहाँ पे लोकेटेड है वो हमें बिल्डिंग एरे बताएगी। ओके, सबसे पहले 1,2 पे है, देन 2,2 पर है, ओके, देन 3,2 3,2 एंड 2,1। ओके, ये 5 बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग इज कवर्ड, हमें फाइंड आउट क्या करना है? A building is covered if there is at least one building in all 4 direction. Okay. ओके, हमें फाइंड आउट करनी है कवर्ड बिल्डिंग, और कवर्ड बिल्डिंग वो तभी होगी जब उसके चारों तरफ बिल्डिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, नाइस नाइस, ओके। सो ओके, हम अपना वो वाइट बोर्ड खोलते हैं, वेट। आई गेस स्क्रीन इज विजिबल, बता देना कमेंट में अगर कुछ भी सही ना हो तो। खुल जा सिम सिम। और क्वालिटी सही है, आई गेस परफेक्ट है सही।
आई गेस परफेक्ट है। ओके ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल उठाते हैं। और जा जा यार, अपलोड स्पीड बढ़िया है, यहाँ डाउनलोड थोड़ी कम है। आजा यार। आ गया। ओके लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक ये है, इसके अंदर हमारे पास एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, नाउ द थिंग इज वी हैव टू चेक दैट कि इसके चारों तरफ बिल्डिंग होनी चाहिए। ऊपर कहीं भी हो सकती है। एक सेकेंड, थोड़ा गलत बनाया क्या? हाँ, एग्जैक्ट लेफ्ट में होनी चाहिए। एग्जैक्ट लेफ्ट, और it can be some coordinates after some coordinates too. Okay, here example, fine, it can be away too. Let's see, थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ पर है एंड एक अपनी यहाँ पर है। what else, एक यहाँ पर एंड दिस इज ऑल्सो। ठीक है, ओके ओके। So if I am at this building, then I have to check its complete row and complete column to know whether there is a building or not. Okay, same with this. I will, if I have to mm, if I have to check whether it has buildings on its all direction, then first I have to check up, then down, right and left. If I finds out, then that is a covered building. It, okay, it can be away to and close as well. Fine. Now what can we do? Okay, okay. If I will check for every building, for example, I have at this. Okay. First of all, I will be making a matrix. Okay. 0. If I have to make a matrix for this, then n cross n है ना, तो it is a 5 cross 5. It is a 5 cross 5, तो मेरे को 6 by 6 लेना पड़ेगा। ये वाला रखते हैं, इसमें 4 by 4 रखना पड़ेगा। लेट्स सी, एक ही अपनी R1, R2, 3 and 4, 1 2 3 4. Okay, wait, this is actually 0 1 2 and 3. Here also it is 0 1 2 and 3. Now we will put values. ये क्या हो गया? Zero. Let's see now. सबसे पहले जो अपनी वन वाली लाइन है उसमें 1,2, तो हम ये वाली रो और ये वाली जो है, हम वैसे कुछ काउंट कर रखने के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे 1,1 जो है
वो मेरा खाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो स्टोर करूँगा, हेयर वन इज ज़ीरो, हेयर वन, हेयर वन, हेयर वन, ज़ीरो वन एंड वन, सॉरी ज़ीरो। ओके, मैं यहाँ पर वैल्यूज स्टोर करवा सकता हूँ वैसे कि इसके अंदर इधर कितनी वो हैं वैल्यूज़ और इधर कितनी है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टोर करवा लेता, लेट्स सी, मैं यहाँ पे वन स्टोर करवाता हूँ, यहाँ पे थ्री एंड यहाँ पे वन, सेम यहाँ पे वन, यहाँ पे थ्री एंड यहाँ पे वन, एंड आई स्टार्ट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम, no, I will call for it, its upside is restricted, okay, it will try to go up, it is restricted, so will not make any call for this. Same with this, same with this, and same with this. No, but what if I am making call at left first? So I can first check the row that इसके अलावा कितने हैं, इसके अलावा दो और होनी चाहिए, तो काउंट शुड बी एटलीस्ट +2 by 8. I can save the complexity by 8 then, and then I am coming here, it says 3, इस रो में 3 है बट कॉलम में 1 है, but column should also be 3 by 3 no, it should be greater than it only, and then we'll find the answer. Same with this and same with this, okay, वो वाला भी ले लेते हैं एक एग्जांपल, ये सबसे एंड वाला है, कितनी कह रहा है, 6, 0 1 2 3 4 5 and 6, okay, wait, मेरा फ़ोन बंद हो गया तो जो इतनी सारी चैट आ रही है पढ़ नहीं पाऊँगा मैं, एक सेकेंड लगना, लग गया। सो सेम ऊपर रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 and 7, alright, एक सेकेंड हम इसे छोटा छोटा कर देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, सबसे पहले कहाँ पे 1,3, 1,3, 1, okay, 1 is the column, in this first one is column and the second one is the row, okay, 1 3, this is 1, what else, 3,2, 3 is the this and 3,3, okay, then 3,5, fifth, and this comes here, right, 5,3, fifth, what does it say, 5,3, third row, the column, here we go, okay, other than these all are 0, let me mark them.
Okay, now I have to store the count here. Okay, this would be 0 only. Now in this direction there is 0, there is 1, and there is 3. Okay, 3. This is 0, this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is 3, this is 0, this is 1, this is 0, and this is also 0. So I would be only making call for those elements which are having uh, which are having क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जिनकी रो काउंट और कॉलम काउंट जो है वो +2 है, +2 है तो ही कॉल जाएगी, ठीक है। और एंड विल फाइंड इन दी वन डायरेक्शन। ओके, आई विल फाइंड इन द डायरेक्शन। एक तो खुद हो गया, सेकंड ये, सो मेरे को इधर वाले नंबर ऑफ वंस खुद पता चल जाएंगे। राइट, इफ जैसे यहाँ पे 3 है, इफ 3 - 1 मेरे को यहीं पर मिल जाते हैं, एक तो वो खुद है जिसके लिए हम कॉल कर रहे हैं, अगर वो मेरे को यहीं पे मिल जाता है, अगर वो मेरे को यहीं पर मिल जाता है, अगर ये सारे के सारे 1 यहीं मिल जाते हैं काउंट में, तो मतलब ऑल आर एट इज लेफ्ट, देयर इज नो वन ऑन द राइट, बट फॉर बीइंग ए कवर्ड बिल्डिंग इट शुड हैव 1 at right also. Same we can apply at top, so we have to apply for this and up also. Okay, yeah, I can do this with all buildings. Okay, let's first create a vector 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 int vector int. What will be having in it? City. We'll call it city with n+1 size, comma, vector int, and it will also have the n+1 size, comma, everything would be assigned to 0. Okay, at first I have to assign the whole buildings in the city array. कैमरे के बाहर चल जा रहा है? नहीं, गुड। It's a nice question. For int is equals to 0, we'll start from the 1 because it's not 0 indexed. 1 colon 1, I must be less than or equal to n, I plus plus, no, it is wrong, for auto iterator onto the buildings, and we'll get a vector int in return. Int first one is column in this. Okay, first is column, right? It's 1,3, 1 is the column and 3 0. Okay, first one is 8 0, first one is column and second one is row. 8 1, and now I have to mark it in the city row
row and column must be equals to 1. Okay, now what I have to do is count the total number of ones and increase their row and column counts. Okay, we can do, I guess, here only. If it is a 1, then its row and column should be increased. Okay, how I am going to write it? City. Okay, wait, I am given with 3 comma 1. Okay, so for increasing the count of it, what I have to do? Third row and 0th column to increase the row count. Okay, and 1 0 1 to increase the column count. Okay, nice. City row 0 should be increased, and city 0 column should also be increased. Alright, here from here we got the matrix in the complexity of buildings, not length. Okay, now up next what I have to do, I have to make calls for these for my building. For auto, again we have to traverse it, buildings, auto it buildings. Okay, same thing, we accepted row and column. Okay, now the main thing arrives. First of all I have to check if जो ये अपना एलिमेंट है, इसका जो सिटी में रो 0 है, इट्स काउंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. एक वो खुद एंड उसके अलावा 2. ओके, am I right? It should be greater than or equal to 3, and then it must also have city 0 comma col. It should also be greater than or equal to 3. Okay, that's all right. Now in this case what I filtered out, I filtered remove this because it is having one here. I remove this, and remove this too. Now I am only left with this. Now I have to check in its left direction and only up direction. Okay, now I have to just go in the top and the left and count the number of ones. Okay, while while जब तक currently I am at here. So if I have to go up, then I have to decrease the number of rows, and the row should be greater than or equal to 1. Okay, instead of it, let's int copy row. It would be row comma copy column. It would be col. Okay, and here we are manipulating the row, copied row. Okay,
it should be greater than 1, and we'll decrease it. Just keep a count int count is equals to 0, and if we get any type of one here, if city में जो है अपना रो सॉरी I should be decreasing it. It should be decreased by 1, and this also be decreased. Should it be decreased by 1? I guess no. I guess yes. Crow, and this should be call only. ठीक है, अगर ये अपना 1 मिल जाता है तो what will do, count plus plus. Okay. Okay, and then just decrease our minus. Now I have to do the same thing. While call I am coming at left, and till it is greater than or equal to 1 I have to come back, and this will be count plus plus. Okay, count is equals to 0 again. Okay, here I have to write it now. Sorry, it would be crow, and here I would be writing call. Okay, I am counting number, one set left and one set right. Okay, if I get them, now I have to check with the count. If count क्या आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा काउंट ये लेफ्ट का जो आएगा वो 1 आएगा. सो जो यहाँ पर मेरा स्टोर्ड है, जो मेरा यहाँ पर स्टोर्ड है ये. ओके, ये जो है अपना 3 0 पे इसका माइनस काउंट अगर मैं करूँ, अगर ये ग्रेटर देन जैसे कि अभी 3 है, ये 3 - 1, इट शुड बी ग्रेटर देन 1. ओके, एक तो होगा ही क्योंकि वो खुद है वहाँ पे, एक तो होगा ही होगा. सो इट शुड बी ग्रेटर देन 1 ओनली. if city row and 0th we will be having for every building 2 variables, bool at left is equals to false, and bool at right is equals to true. Sorry, should also be false, and it should be at top. Okay, if we finds out this and then minus count, it should be greater than 1 only.
If it is greater than 1, then what can I do? At left, sorry, at top को मैं ट्रू कर सकता हूँ, नहीं तो फॉल्स ही रहेगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पर आकर करूँगा। if city 0th row 0th row and column, it's column minus count that we just counted while coming back up. if wait, ah, if I am at, what if it won't be, what if it is 0? I didn't find any here, so according to it all are there, so count should also be having a value. Okay, and count must not be equal to 0. What if it is 0? And count must not be equal to 0. It should be having some values for sure. Okay, if I am having 2 here, 3 minus 2, it should be greater than 1, so it gives me 1. That 2 of the ones I got here only, so 1 is greater than 1? No, it didn't pass this condition. Alright, at left is equals to true, and at the end, after doing this all shit, what I'm supposed to check, if at the left and at top, if we are having both of them is true, then just increase the answer by 1. I guess we are good with it now. We are good too. The answer is equals to 0. तो काउंट 0 नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए उसकी वैल्यू, ठीक है। अज्यूमिंग लाइक कि इस रो में है ही 2, 2 minus 0 must be greater than 1, but this won't be concluded. But I already wrote that it should be greater than 3 or equal to 3. Fine, I guess we can check now. Return answer. चल जाओ what happened mate? What did I wrote? I wrote it left only ना, अच्छा, okay, wait, oh man, I'm feeling pain here. Leave it. Yes, here it is, at left, at top, and will be same here, at top, at left. Do we have to do something minus like that, something? Let's go. Nice, that's great. How come, bro?
to make a 4 cross 4. I guess we have made already. Let's check with it. Let's use this test case. If I have to check its complexity, what is it? Then buildings, one array, this n cross n cross n, I guess. This is, if I am taking buildings, length is m of building, first of building, then again of building into, I have two rows going up and down in which I have cities of n plus of n. So in short, it is O of b into n, mn m. Okay, where is this matrix? Let me read it. Okay, let's see. Expected is 2, but my answer is coming 1, 1 comma 2. 1 is the column. Okay, 2 comma 1, 2 is my column. Nice. All right. 3 comma 1, 3 comma 1. Okay, 2 comma 3, 2 comma 3. Okay, till now there is no building which satisfy the condition. Okay, 2 comma 2 and 3 comma 2. Okay, understood. It is covered, and it is also covered because it is having it left. Okay, there can be a condition that it is at the corner. Okay. If it is at corner, then if it is at the nth, n, if it is equal to n, then what we'll do, we can have this is else. I can take an if here. If this building, if row is equals to either n at top. Okay, if it is at the top only, one or row is equals to n. There are two possibilities. Same with the column. Else, if column is equals to 1 or column is equals to n. Alright, if we are at the end positions, then what? If I am standing here, okay, with that case
In that case, this is also an answer. No, it doesn't have any left. This, I can say this is the answer then. This is the answer, no. This can also be the answer. Why these cannot be the answers? Then the answer should be 4, na? What? At first it told me it is a wrong answer. Wait. What is it? I just wrote if they are at the edge, then it's not, na? If they are at the edge, then they cannot be the answer. What do you mean? It should have all. It should have. There is no chance that it should. If it is empty, then we are not considering it. Row must not be equal to 1, and row must not be equal to n. Okay, these both conditions, and these both should be true, and same with this. Column must not be equal to 1, and column must not be equal to n, and okay. If it is 1, then it is false, which gives false in return. Okay. Let's see what are we having at next. Okay. Let's check. I guess we are close to the answer. 4,4. Damn it, 4. Damn it. 4 and 4. Let's just remove it. Okay. 4,4. Then second column with the fourth one row. First column with the second row. Second column with the first row. Then fourth. Can we paste it there? Thank you. Black. Okay.
4, second row, second column, fourth, first column, second one, second column, this one. Now fourth column with the third. Okay, third column with the first, fourth column with the first, fourth column with the second, 1, 4, first column with the fourth, second column with the third, 3, 3, third column with the third. This comes here, 3, and 1, 3 is the last. Okay, so the answer should be, remove this. Wait, let me change the color of the pen. This is cancelled because it is at the all boundaries are cancelled. These cannot be the answers in any case. Okay, so the answer comes out to be 4 now. Output is 4. What expected is 3. Why? Okay, this person. These 3 are the answers. This shouldn't be counted as the answer. Okay, if I am having a Cout row to the call, no, with the handle, it would make it sure that I got the right thing. What is it? 3, 2, 3, 2. Okay, then 3, 3. All right. 3, 3. 3, 3. How come? When I am at the 3, 3, this value should be 3. Wait. This value is my 4. This is also 4. This is 3. This is 3. This is 3. This is 3. This is 4. This is 4. And this is 3. Okay. When I commit it checks that yes, both of them are greater than or equal to 3. Alright. Now जब तक कि अपना 0 कॉपी रो जो है जब तक बड़ा है 1 से, तो हम ऊपर जाएंगे और काउंट करेंगे नंबर ऑफ टूस. ओके, इट केम आउट टू बी 2. ओके, came out to be 2. So row is not equal to no. Alright, now city row 0. City row 0. Row, if I am going up, then why am I checking it off now? Then it should be 0, call. I guess we are checking wrong thing. Row, 0. I am going up now. Row, 0 should be checked. Sorry, 0, call. 0th row on this. This should be the one now whom we are checking. So it would be 3 here. 3 minus 2. Let me check. Is this the problem? I guess so. Because when I am moving it left, yes. Yes.
it was the mistake, right? चल जाओ, अरे यार, it came up correct ना, it is there only. Aren't these two same? Test case same. Well, it is right. Now n is 4. Is the n4? Yes. Let's see. Let's see what is the problem. It's fine. Happens. Let's see. What else do we mark? What else should be marked? How do I take the pointer? How do we go with the pointer, man? Lasso, eraser, smart. Do we have to select the list? Where we were? Okay. 4,4 it is marked. 2,4. This is one first column, third column, second. How many ones are there? 1, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 8, 6, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. It is the same. It is having extra now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, it is having one extra. See, 4,4. Let me paste it again. Change the color to black. Black. Okay. 4,4 done. Second done. First, second done. 2, 1 done. 3, 4. This is the new. This is the new one. 3, third column. Oh, third column first row altogether. First column first. Okay. Nice. First column, fourth. This is. The answer should be same now. How it can vary? 3, 2, third row,
second. Alright, 3 comma 3. Why the hell is 3 comma 3 coming again? Here? Wait, let me write the. This is 4, this is 4, this is 3, this is 4, this is 4, this is also 4, this is also 4, and this is also 3. When we made a call for this, it checked at its top. Okay, 0 जब तक इसकी 1 या 1 से बड़ी रहेगी तब तक ये काउंट करेगा. So it counts, and what it counted. Wait, let me print this first. For photo in city, we have to print the city now. For int I is equal to 0, I must be equal to n plus plus. For int j is equal to 0, j must be less than equal to n plus c out. Yeah, city j slash n. All right, let's see. Let's see what does the metric say. That is so wrong. So wrong. Okay, 0 4 4 3. Is this not available? No. What is it? Hello. 0 1 2 So इधर 0 1 2 वो पूछूंगा फॉर्म भेज देते हैं 0 1 2 3 4. So 2 comma 4. Isn't there any 4 comma 2? Okay, so this is the matrix now. Wait, let me where is my pen? What did it say? 1, all are 1 except this. All are 1 except this. What the hell? Yes. So the answer would be, this is not the answer, this is not the answer, this is not the answer, this is not, 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 and this. That's it. Now, no, wait. 4 4 4 3, and this is 4 3 4 4. Everything is stored correctly. Yes. Now 3 comma 2. 3 comma 2. It's all right. Then 3 comma 2. 3 2. Good. 3 comma 3. 3 3. No problem. No problem. No. Then 2 comma 2. There is no problem. Then comes the 2 comma 3. Why are you coming wrong? So if I have to check for it, it will go on to his left. It is 3 and it checks 2. Wait, let me check it. It goes on to its left. At left now.
We didn't wrote this here. This should be greater than 1, no? What is it? That's the basic thing. Hmm. Please. चल जा चल जा चल जा चल जा. Okay. Better than the error. Way better than the error. Okay. No sense of watching it. Now what could be the optimized approach for it? Check left, check up. Can we reduce something from here? What is it? Is this the reason? Can this be the reason for it? Is it possible? Let's see. I guess it is all overall not good. Oh, that was so. Damn, I got this error first time. Memory limit exceeded. What does it even mean? What is it? That's crazy, yeah. Let me check. What is it? Memory limit exceeded. Means surrounding the system. Okay. Okay. Okay, so we are not allowed to take this then. Right. But we have to store it now. Let me think. What can we do? What else can we do? We already did that we can do.
the solution. First of all, I don't think it is possible to do without taking this 2 by 2 matrix. We are close though. Can it be by decreasing something? Let's check the topics. Array sorting. If I store them all of them in the map, then if I make it here, I checks that is for any value. Is it possible to do this? Like we can check इससे कम कोई वैल्यू के लिए कहीं पर है क्या? The answer is to only find dependent key value stores. We find whether there is value greater than x in map or not. Python Java should to the moment check the second of each pair. No. Without checking. अगर मैं इसे हैश में स्टोर करता हूँ, what if we store them in a hash map? And then we'll be checking for lesser, for greater.
I have to check in all four directions. Which would be n and n. अभी थी ये देखो क्वेश्चन देखो, ये अपनी एक सिटी है n क्रॉस n की, ठीक है, जिसके अंदर हमें बिल्डिंग्स दे रखे हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। एक बिल्डिंग कवर्ड, हमें नंबर ऑफ कवर्ड बिल्डिंग्स फाइंड आउट करनी। कवर्ड बिल्डिंग क्या होगी, जिसके चारों तरफ एक बिल्डिंग एटलीस्ट हो, ठीक है, ओके। अरे भाई इसमें ऐसा क्या है, अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तुम भी कर सकते हो। चल, हाँ, तो इसके चारों ओर अगर है बिल्डिंग तो ये कवर्ड बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे कि ये अपनी, मैंने क्या मैट्रिक्स ले रखी है, यहाँ पे जो है ज़ीरोथ बिल्डिंग कंसिडर नहीं हो रही, ठीक है। तो ज़ीरोथ वाली रो अपनी और कॉलम वेस्ट हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स उस कॉलम में स्टोर कर ली और उस रो में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 4 4 3, ठीक है, इस कॉलम में 3 है, 4 3 4 4, ठीक है। अब जो अपने ये एज वाले हो गए, इन पे तो हम कुछ रन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ना लेफ्ट में ना ऊपर हो ही नहीं सकती, बट कवर्ड होने के लिए होनी चाहिए बिल्डिंग, होनी ही चाहिए। तो ये सारे तो नहीं है, ठीक है। अब बात आ गई ये इन सब की, ठीक है। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि जो, अगर मैं इसके लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ये कॉलम्स कम करूँगा, लाइक लेफ़्ट जाऊँगा और 1 काउंट करूँगा। तो जब मैं लेफ़्ट जाऊँगा तो मेरे को मिलेंगे 2 1, ठीक है। इसके लेफ़्ट जाऊँगा तो 2 1 मिले, और एक काउंट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर है, तो 3 -2 करूँ मैं तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा ना, तो ही इसके इस तरफ एक 1 होगा। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो जब ये इसके लेफ़्ट साइड जाएगा तो इसे एक ही 1 मिलेगा, तो 3 -1 कितना होगा, 2। तो 2 जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, तो मतलब दूसरा 1 उसके दूसरी साइड है। यही सेम लॉजिक ऊपर वाली साइड है, ये रहा। सिटी 0 कॉल माइनस काउंट शुड बी ग्रेटर देन 1। एक तो ये खुद हो जाएगा, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ 1 मुझे यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो इसका सम प्लस ये और ये 3 होना चाहिए इन शॉर्ट। इसके लेफ्ट साइड में गया, इसको 1 मिला, तो तो अगर इस तरफ 1 है तो मतलब दूसरा उस तरफ ही होगा, ठीक है। अब बता भाई, बता बता बताना। तो इसमें दिक्कत आ रही है मेरी यहाँ पे, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड पे।
बताओ। ई- यार कोई है मर्द का बच्चा जो मुझे बता पाए। छोड़ो, कुछ और देखते हैं। एक तो होता होता रह गया, थोड़ा सा बच रहा है, हल्का सा होता होता रह गया। क्वेश्चन लिंक। अरे डेली वाला है तो टॉप पे आ जाएगा ना। बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। साढ़े 11 पे पॉज मार दूंगा मैं इसे, फिर 12:30 आ जाऊंगा वापस। सोर्स टेक्स्ट के एरियल व्हील ई वी बैक एट 12:30। ओके ठीक है। क्या है, हिंट ले लेना, मेरे को सोचना पड़ेगा। अंधेरा हो गया, कहाँ गया? अरे वो मैं अगला वो 11:30 से 12:30 वाला वो टेक्स्ट लिख रहा था, विल बी राइट, विल बी बैक एट 12:30। हाँ आ गया ना मैं, शायद। हाँ अरे हिंट तो ले लूँगा मैं, पर मेरे को ये वाला सॉल्यूशन चलवाना है, मैं लिख रहा नया।
हाँ नहीं तो हिंट दो। ग्रुप बिल्डिंग विथ द सेम एक्स और वाई वैल्यू टुगेदर एंड सॉर्ट ईच ग्रुप। क्या बकवास है। एक्स वाली एक साथ और वाई वाली एक साथ, फिर क्या करूँ। क्या हाँ। हाँ क्या होता है। कल तक बता दूंगा। इतने में तो भाई ये क्वेश्चन निकल जाएगा, फिर यहाँ टिक कैसे लाऊं मैं। हे। हाँ दिख गया तू कह रही थी। अच्छा ठीक है। ये तेरे को मेरा मेरे वाला समझ आया अप्रोच जो मैं बता रहा था। नहीं अरे भाई कैसी सी। देख फिर से बता रहा हूँ, इस बार सुन लियो। सबसे पहले तो सारी बिल्डिंग्स, पहले क्वेश्चन तो समझ लूँ तो समझाऊँ क्वेश्चन। रुक गया। आज आज बिना क्वेश्चन हुए नहीं जाऊँगा। कोई एक तो होगा ही होगा भाई। पिछले दो में एक भी नहीं हुआ। अटेम्प्टेड 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 पे रुके जा रहे हैं दोनों चीज़। समझा। ठीक है। हम्म। सबसे पहले अपना एक पॉजिटिव इंटीजर है एन, जो कि हमें गिवन होगा। ठीक है। और तो हमें जो कि एक एन क्रॉस एन की सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एन इजिकल्स टू 3 है, तो 1 से लेके 3। और एक ये स्क्वायर, इसके अंदर अपनी बिल्डिंग्स होंगी। ठीक है। ठीक है। अब हमें एक बिल्डिंग एरे दे रखी है जिसके अंदर हर एक बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, कवर्ड बिल्डिंग्स फाइंड आउट करना है। और कवर्ड बिल्डिंग की क्या डेफिनेशन है कि उसके चारों डायरेक्शन में एक ना एक बिल्डिंग होनी ही चाहिए। ओके। ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन समझ आ गया तो बता फिर अप्रोच बताऊँ। जैसे कि ये है एक और, इसके चारों तरफ है, तो ये भी हो जाएगा कवर्ड बिल्डिंग। हाँ ना। कुछ बताओ तो मैं अप्रोच बताऊँ फिर। एक मिनट रुक जा, खुद पढ़ कर आती क्वेश्चन। अरे भाई इतना गंदा समझाता हूँ मैं। नहीं क्लियर हुआ। अरे इसमें क्या है, उसके चारों तरफ बिल्डिंग होनी चाहिए, दैट्स इट। इसमें क्या है। और ऐसी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स काउंट करनी है जिसके चारों ओर बिल्डिंग हो। इसमें क्या है, अरे दिमाग से पैदल है क्या। क्वेश्चन तो सामने भी दिख रहा है, ये दिख रहा। तुम जैसे लोग पिटने चाहिए। हम्म, मन कर रहा है चैट जीपीटी को फेंक के मार दूँ कोड को भाई से। कर दे यार थोड़ा, हो सके तो। विदाउट हैश पॉसिबल नहीं है ये। हैश में ये जो इन्होंने ग्रुप बोला है।
Group buildings with the same survival together. ये कैसे होता है? ये हिंट भी ऐसा है, खुद पढ़कर आया ना समझ। चल हमने क्या दूसरी भाषा में कहा था? अब भाई मेरा अप्रोच ये था कि एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम। एन एन जैसे मुझे 5 दे रखा है, तो मैं n+1 की बनाऊंगा, ठीक है, ताकि 0 1 2 3 4 एंड 5। ये 4 थोड़ा गंजेड़ी सा हो गया। पापा को बोल दूँ मुझे दिमाग से पैदल मत बोल, सॉरी। 0 1 2 3 4 5। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। अब जो भी बिल्डिंग्स है वो उनका कोऑर्डिनेट 0 तो नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है किसी भी बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट। स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, ठीक है। हाँ ना, वही बता रहा हूँ। तो जो अब अपनी बिल्डिंग वाली एरिया मैंने उसे ट्रेवर्स करा, उसमें से कॉलम और रो पिक करा, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे सिटी में बिल्डिंग है उसे 1 कर दिया, ठीक है। जैसे कि अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा। जैसे कि यहाँ पे अगर बिल्डिंग है यहाँ पे 1 कर दिया। हाय क्या, हाय की क्या बात है इसमें? यहाँ यहाँ अज्यूमिंग कि यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है। एक तो मैंने ये करा, और जो मेरा ये ज़ीरोथ वाला कॉलम कॉलम और रो है, इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स स्टोर करा, ठीक है। जैसे ये वाला जो मेरा कॉलम है, इसके अंदर कितनी कितनी बिल्डिंग है 1, तो वो मैंने यहाँ स्टोर करा। 2 वाले में कितनी है 0, 3 वाले में कितनी है 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। इस वाली रो में कितनी नंबर ऑफ बिल्डिंग है 1, इधर 2, इधर 2, इधर 0 और इधर भी 0, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि मैंने एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। अब हम फिर से बिल्डिंग वाली, इतना समझ आया ये क्या बनाया है? पहले ही बता फिर आगे बोलूँगा। बता। अब लिख ले कुछ। पीछे चल लिए क्या तू? अब क्या छोड़ के भाग गई क्या रैंडमली बीच में? व्हाट आर यू डूइंग मैन? पुराने मैसेज 5 दिन में पढ़ रहा है, मेरी गलती है। अरे तो तू आगे करना, तेरी पीछे चल रही है। लाइव कर। गवार। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, दैट्स योर फॉल्ट। अब तो बता कुछ। हाँ आ गया, ठीक है। अब लाइव हो गया। पीछे कर रखा होगा। हाँ, तो सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि अगर अगर मेरे को वो कवर्ड बिल्डिंग होगी, है ना, अगर वो कवर्ड बिल्डिंग होगी तो उसकी रो में
टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए, और कॉलम में भी एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, है ना। सही बात है। एक वो खुद, और बाकी दो, एक उसके लेफ्ट में हो सकती है और दूसरी राइट में एटलीस्ट। दिस इज़ द मिनिमम केस। ठीक है, जो कि ये यहाँ पे कह रहा है कि रो ज़ीरो पे मैंने क्या स्टोर करवा रखा है कि उस रो में कितनी नंबर ऑफ बिल्डिंग है, और 0, कॉल पे उसके कॉलम में कितनी बिल्डिंग है। ठीक है, उसके कॉलम में कितनी बिल्डिंग है, जैसे ये वाला एलिमेंट, इस पे मैं भी चेक कर रहा हूँ, तो इसके कॉलम में कितनी बिल्डिंग है और इसके रो पे कितनी बिल्डिंग है। ठीक है, तो अगर जब तक दोनों 3 से ज़्यादा नहीं होंगी तब तक हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सबसे पहले। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ, जैसे 1 1 1 0 0, ये एक रो कॉलम मान ले। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जो होगी नंबर ऑफ, ये होगी 3। ठीक है, अब मैं ये चेक कर रहा हूँ, 3 तो है एटलीस्ट। अब मेरे को ये चेक करना है कि इसकी दोनों साइड है या नहीं। ठीक है, अगर मैं इस वाले पर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी जो इसकी रो है वो है 0 1, नहीं 1 2 3, थर्ड रो है इसकी। ठीक है, रो नंबर 3 में है ये। तो मैं एक पॉइंटर रो नंबर 2 पे रखूँगा। ठीक है, हाँ, और उसे माइनस करता रहूँगा जब तक कि वो रो 1 पे ना पहुँच जाए। ठीक है, और साथ ही साथ काउंट करूँगा मेरे को कितने 1 मिले उसमें। ठीक है, तो जब मैं एक ऊपर गया मेरे को एक 1 मिला, फिर मैं एक और ऊपर गया मेरे को एक और 1 मिला, तो मेरा काउंट हो गया 2। ठीक है, काउंट हो गया 2। अब एक तो ये खुद है, ठीक है, और टोटली 3 है, और दो दो मुझे यहाँ मिल गए, तो मतलब दूसरी साइड तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक ये खुद है, दो मुझे मिल गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, काउंट काउंट +1। ठीक है, काउंट +1 जो है ये और ये, गॉट इट, है ना। तो काउंट जो हमें मिला +1 जो है वो ना कम होना चाहिए इस वाली वैल्यू से, 3 से, तभी तो इधर कोई बचेगा, है ना। वर्स्ट केस में 3 डायरेक्शन तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, 3 डायरेक्शन में भी जाएंगे, एक ऊपर चेक करेंगे और एक बारी बस लेफ्ट चेक करेंगे ना, दो ही जगह चेक करेंगे। अभी ये सुन पहले, ये मेरे को ऊपर 2 मिले और ये खुद एक है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम इससे कम आएगा तो ही इस तरफ कोई बचेगा। जैसे कि अगर मैं इधर 0 लिखूं और इधर 1, ठीक है, तो काउंट कितना है, 1, एक ये खुद, तो अब एक बच गया, तो ऑब्वियसली वो इस तरफ होगा, तो मिल गया मुझे। ठीक है, सेम चीज़ मैं लेफ़्ट साइड लगा लूँगा, लेफ़्ट साइड फाइंड आउट करूँगा। अगर मेरे को वो इधर वाली वैल्यू से माइनस करके एक से ज़्यादा आ रही है, तो मतलब दैट्स इट, तो इस तरफ पता चल जाएगा है या नहीं, है कि नहीं। मेरे को ये वाला वैल्यू बता रहे कि यहाँ पे टोटल कितने हैं, एक पर मैं हुई तो मैं एक साइड चेक कर लूँगा, तो मुझे ऑब्वियसली पता चल जाएगा ना कि राइट साइड है या नहीं, कितने हैं। आप आए समझ क्या कह रहा हूँ। हाँ, और अगर एज वाले हैं तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा। ये हूँ,
हाँ लिखती अगर समझ आया होता ना, बट लिखा था। ठीक है। अरे यार वही बंद कर दिया। गॉट इट ना, हाँ सही था ना वैसे, सॉल्यूशन तो मेरे हिसाब से बढ़िया ही था यार, बट ये लोग थोड़े बदतमीज से हैं। मेमोरी लिमिट एक्सीड आया, बताओ हाउ, मतलब क्यों, कितने बच रहे थे यार ये, बस 15 और हो जाते, एक टिक आ जाता, सिक्का भी आ जाता एक। हम्म, क्या, डीएस क्या दिया हिंट में, भाई हिंट तो बड़ा गंदा है, इससे बढ़िया तो मत ही लिखो हिंट, पढ़ ले खुद ही पढ़ ले, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब एक्सप्लेन। ग्रुप बिल्डिंग्स विद द सेम, x और y value together and sort each group in each sort will is a building that are not the first order। अच्छा, समझा मैं, समझा समझा, समझ गया मैं। जो एक्स वाली हैं उन्हें एक साथ ग्रुप कर देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर सोचे, और वाई, तो जो फर्स्ट और लास्ट वाले के अलावा जितनी भी बीच में होंगी वो सारे अपने आंसर हो जाएंगे। तो यार ऐसे तो मैं, लेफ़्ट टू राइट अगर जाऊँ एरे में, अच्छा नहीं ठीक है वैसे, अब मैं 12:30, थैंक यू, थैंक यू, कहाँ गया,